Like we discussed, one of the more important decisions that a finance manager has to take is the financing decision. मतलब पैसा कहाँ से उठाना है, ठीक है? And when he is trying to take the financing decision, a question might be asked कि if you are deciding between debt and equity, what are the factors that you will consider? One factor would be ongoing servicing cost. Debt is, what does that mean? They are saying debt is usually cheaper than equity due to lower risk faced by providers of finance and the tax relief possible on interest payments. एक तो cost of debt is lower than cost of equity. We have seen that in a cost of capital वाला discussion. Plus interest paid on debt is tax deductible. तो वो भी एक benefit है which is not available when you are going for equity. ठीक है. Cost of issuing debt is lower as compared to cost of issuing equity. Equity के तो there is a different headache when you are raising money by way of equity. But you also have to understand that the gearing of the company also plays an important role in decision making. Gearing basically talks about the presence of debt in your capital structure. Debt is the cheapest source of finance, no doubt, but debt also brings risk with it. See, you have to understand that any source of in any discussion, ठीक है, anything that brings in a fixed cost is a matter of concern, because see, variable cost is incurred only when you produce something, but fixed cost is incurred even if you don't produce anything. Equity shareholders को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, बट when you raise money by way of debt, paying interest is compulsory, right? So it creates that pressure on cash flow. There are different theories that help you to decide ki what is the correct proportion of debt and equity. We'll understand what those theories are, but the company might have a certain perspective कि यार हमें सिर्फ 30% डेट चाहिए, because beyond that the shareholders consider the company to be extra risky. जस्ट माई डिजायर कि यार मुझे डेट से पैसा उठाना है या मुझे इक्विटी से पैसा उठाना है इज नॉट इनफ. द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आर is funding available in the market? There is a common term that we come across which is called funding winters. What are funding winters? This is a term which is commonly used in private equity. It refers to that entire period of time when market में funding available ही नहीं है. Like, see, I want to build a beautiful mansion in Noida, ठीक है, एंड मुझे चाहिए 5 करोड़ का लोन. एंड आई एम लाइक, हाँ, आई एम ओके गोइंग फॉर डेट, बट बैंक शुड बी ओके गिविंग मी 5 करोड़ का डेट ना. मुझे चाहिए डजंट मीन कि बैंक विल गिव मी. सो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट. टैक्स पोजिशन, जैसे डेट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इक्विटी डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल. एंड ये जो एफआर में हम स्टोरीज सुनाते हैं ना कि what preference share capital has features of debt, so let us show it like financial liability in the balance sheet, and then dividend paid on preference capital should be shown as finance cost. ये सब स्टोरियां तो बहुत सुनाते हैं हम एसबीआर में, है ना? एंड वी कॉल आर से, मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि ओ माय गॉड, आई अप्लाइड द मैचिंग प्रिंसिपल. बट टैक्स अथॉरिटीज आर लाइक, गो टू हेल, वी डोंट केयर. डेट डेट होता है, प्रेफरेंस कैपिटल होता है. टैक्स डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन डेट, नॉट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड. देन कैश फ्लो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ दी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब some companies are okay to borrow funds, but when there is a huge chunk of cash available, they are okay in repaying also. So do you have that mentality कि यार I'll trade a lot using debt, but जब पैसा आएगा I will return the amount? So that is a high risk zone. Companies need to be mindful of that. Apart from that, certain आपका जो debt agreements होता है, loan agreements, sometimes they contain restrictive conditions like which are called debt covenants. अब ट्रिपल ए, if you have done ट्रिपल ए में we come across these debt covenants, and लिखा है यहाँ पे किसी ने ट्रिपल ए, कार्तिक has written, right कार्तिक? सर एसबीआर में भी क्वेश्चन था डेट कोवेनेंट पे के वो गेयरिंग के ऊपर डिपेंड या करता है गुड, एरिया में। था क्वेश्चन. इट गोज बिलो 50%, वो वाला ना, हाँ. अच्छा याद है. वेरी गुड. आई थिंक फिस्कर्टन कंपनी या ऐसा कुछ हाँ हाँ, क्वेश्चन है. और वही क्वेश्चन सेम एग्जाम में भी आया था वैसे ही, डेट कोवेनेंट पे। हाँ, मतलब मैं जो कराता हूँ वो पेपर में आता है.
हाँ तो पढ़ लेना अभी इस बार अच्छे से। So what is a debt covenant? A debt covenant is a restrictive condition in a loan agreement. This is done in order to prevent people from taking too many loans. Suppose my salary is 5 lakh rupees a month. I wish it's not. एक्सक्यूज मी। जिसका मंथली सैलरी 5 लाख है, उसको मिल मिल के कितना लोन मिलेगा? मे बी 4 crores। I go and ask for a loan of 50 crores. Bank will say, get lost. You don't have debt servicing capacity. But I might end up taking loans from certain unsecured lenders. So a debt covenant does what? Debt covenant says कि देखो, अगर तुम्हारा interest cover goes below 4 ना, you will have to repay the entire loan. ठीक है? If your interest cover goes below 4, you will have to repay the entire loan. So or if your gearing for if or if your gearing goes above 40%, you will have to pay some penalty or something. So these restrictive clauses in the loan agreement also prevent you from borrowing beyond a particular capacity, and then of course the risk capacity of the investor. ठीक है? अब when it comes to equity financing, there are multiple ways of going for equity finance. One is आप रेगुलर इनिशियल पब्लिक ऑफर करो। अब इंडिया में तो अभी ऐसा लग रहा है हर कोई कंपनी इज गोइंग फॉर आईपीओ, राइट? अर्बन कंपनी का हो गया, स्विगी का हो गया, जोमेटो का हो गया, और किसका हुआ? सर एक अभी एक शैम्पू ब्रांड था रावेल करके, मतलब वो एसएमई था, बट एक उसने भी आईपीओ लेके आया, मतलब आई आज तो कल वुडंट तो नो, सबको। आई कांट रिलेट विद शैम्पू ब्रांड्स, but yes, almost every other company right now is going for IPO. That is a quick way to raise money. कभी ना कंपनीज का प्रोस्पेक्टस पढ़ना when they are raising money. It is so surprising. Most of these companies ना they are raising money for meeting working capital requirements. मतलब आप सोचो, एवरीडे बिजनेस चलाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है. All these high valued unicorns, they don't have money to even pay their regular expenses, which is why they are raising money by way of an IPO. You could also do rights issue to shareholders. What is a rights issue? मैं बताता हूँ। कुछ गलत आंसर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। करना है ट्राई? हाँ करता हूँ ना, मतलब हाँ राइट्स बता। तो सर भी बेसिकली तूने सच। गलत आंसर दिया ना तो देख लेना अशुभ, मैं नहीं नहीं, कांटेगली आके पकड़ूंगा। एक मतलब एकदम हाँ लेमन लैंग्वेज में कि बेसिकली हाँ। शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन मिलता है कि यू आर गेटिंग अ राइट टू सब्सक्राइब अ पर्टिकुलर शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो मतलब एक उनको एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपको खरीदना है तो 100 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए में, 10 रुपए में एग्जाम्पल में मिल हाँ सकता ठीक है। है। फेयर फेयर। वैसे बस। बेसिकली if the company has certain existing shareholders and उसके बाद the company decides कि you know what, I'm going to raise more money from the raise more money from the market. So existing shareholders will say कि यार if you raise more money from the market, then हमारा परसेंटेज होल्डिंग इज गोइंग डाउन ना, आर परसेंटेज शेयर होल्डिंग इज गेटिंग डाइल्यूटेड, वी आर नॉट ओके विद दिस आइडिया. सो कंपनी से किया फिर तुम ही खरीद लो ना शेयर्स, यू ओनली परचेज द शेयर्स फ्रॉम अस. सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू शेयर्स इन अ proportion, or in proportion to the number of shares they already hold, but these shares are issued at a price which is slightly discounted. मतलब instead of recording off, हाँ. So instead of basically, say for example, the market price per share is 100, these shares will be sold to them at 90, for example, slightly discounted. And in that way, the existing shareholders, they are able to maintain their current stake, current shareholding. If they don't want, they can give up the right, and then of course the company can raise money from outsiders. ये हो गया rights issue. There is something known as private placement also. Private placement, see, public issue means you are, what happens in an IPO, there is no restriction. Na Satyamet, Kavya, Srishti, Nishant, everyone can subscribe to these shares. The advertisement literally comes out in a newspaper. Public offer है, public से पैसा ले रहे हो. Private placement is, I call up 4 or 5 friends of mine or people I know, and I say here I need funds for expansion of business. Why don't you invest money in the company? And I raise money from them and I allocate shares. That is called private placement.
Yes, Mr. Shah. So I just wanted to ask a question that uh, if a company goes public, right? Then after then they want to raise more funds like rights issue और वो तो पहले जब भी उन्होंने आईपीओ लाया तभी एग्जांपल में 1 लाख शेयर्स उन्होंने इश्यू किए पब्लिक को, तो 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट या फिर उनको शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हो गए। तो अगर और राइट्स इश्यू करने हैं तो बस उनको सिर्फ एक पेपर ही बनाना है ना कि भाई मैं और राइट्स या और शेयर्स इश्यू करना चाहता हूँ। बस एक मतलब एक सिर्फ पेपर पे ही है ना वो वैल्यू तो, और और तो कुछ भी नहीं है। कौन सा वैल्यू? मतलब एक पहले 1 लाख शेयर्स थे मार्केट में आईपीओ के, ठीक है, हम्म। वो आ गए मार्केट में, फिर उसके बाद हम्म। कंपनी को और जरूरत पड़ी तो और 50,000 राइट्स और इश्यू कर रहे हैं। तो जस्ट दे हैव टू प्रिंट अ पेपर के भाई वी आर, मतलब और 50,000 शेयर्स ऐड हो रहे हैं, तो मतलब 1 लाख प्लस 50,000 तो टोटल 1,50,000 शेयर्स हो गए, बस उतना ही करना होता है ना मतलब। तो ओनर्स का ऑटोमेटिकली उनका शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा, बट यही होता है ना ऐसे ही बस। इन अ वे बट नॉट फुल्ली। नॉट फुल्ली आई वुड से, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है। हम्म। वी विल हैव टू ऑफ कोर्स इट्स अ होल डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? कॉल 4 पीपल आई नो, शुभ के पास बहुत पैसा है, उसको फोन करो, 50 करोड़ डाल, आई विल मेक यू अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक वाला जो एक्टिविटी है, उसमें यू कैन गो फॉर आईपीओ विच यू नो। Excuse me. Along with that, there are other methods called Dutch auctions, special purpose acquisition vehicles, and reverse takeovers. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दीज। एक ना रिवर्स टेक ओवर पे थियोरी क्वेश्चन है। गारनॉड कंपनी या जुला कंपनी या मॉर्टेक्सा, तीनों में से एक में है रिवर। रिसोर्स कंपनी। कौन सा है? रिसोर्स। हाँ मतलब वन को है उसी हाँ एम एंड हाँ केस में, उसमें हाँ। ही है, यस। राइट। सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन रिवर्स टेक ओवर। उसमें बाय द वे रिवर्स टेक ओवर का कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट थियोरी क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिवर्स टेक ओवर। Direct listing is, IPO. There is special purpose acquisition companies called SPAC. A special purpose acquisition company is a company without commercial operations that is formed strictly to raise capital through an IPO for the purpose of acquiring or merging with an existing company. SPACs are commonly formed by investors or sponsors with expertise in a particular industry or sector. SPAC founders may have an acquisition target in mind but don't identify that target during the IPO process. The funds raised by SPAC are invested in an interest bearing trust account. A SPAC has 2 years to complete a deal or face liquidation. Now, imagine karo, there is a company in the edtech sector. I think physics wala got listed, na? यस सर। I haven't gone through detailed financials, but यार ये सारे companies ना, they are companies with eroded net worth. Negative eroded net worth वाली companies है, still they are getting listed. Anyway, I haven't gone through, I don't know exact situation. वरना कल notice आएगा मुझे कि why did you say this? Anyway, the point is कि say for example there is a company which is facing certain compliance issues, तो उसको stock market listing doing that is very difficult because stock market wants clearance on all the statutory compliances and everything, and right now the company is not able to provide that. तो ऐसे सिचुएशन में what happens is you set up a separate entity called a special purpose acquisition company. ठीक है, it's a company as they said it does not have commercial operations, मतलब there is no business that the company is doing, कुछ भी activity नहीं कर रहा है, but they form a company एंड द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग दिस कंपनी इज कि यार तुम एक यू रेज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, आप पैसा रेस करो एंड देन उस पैसे से अक्वायर दिस कंपनी एंड मर्ज इट विद इन यू। That kind of a situation, that is what a special purpose acquisition company does. Of course this is not इतना डायरेक्ट नहीं है कि अरे यहाँ से पैसा उठाया मार्केट से फिर जाके ये कंपनी खरीद लिया। आई एम नॉट बाइंग स्टफ ऑन ब्लिंकिट ना, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट हैज़ टू बी डन थ्रू अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स रूट। जैसे you'll have to set up a trust, फिर उसमें पैसा डालना पड़ेगा, so that's the entire procedural part. But SPACs, it offers advantages for companies that have been planning to go public, but it is quicker than a conventional IPO. The company, say for example,
देर इज सत्यमेव प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कंप्लायंस इश्यूज थे, जीएसटी था, पीएफ था, कुछ कुछ इश्यूज चालू है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्टॉक मार्केट लिस्टिंग नहीं हो रहा है। तो एक अलग कंपनी एस्टेब्लिश करो, मेक दैट कंपनी अक्वायर सत्यमेव लिमिटेड, एंड देन दैट वे इट गोज पब्लिक। बट इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आपको एकदम ही लेमन लैंग्वेज में बताया है। इट इज़ नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय द वे। हाउ डज अ रिवर्स टेक ओवर वर्क? ठीक है, अब रिवर्स टेक ओवर कैसे होता है, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, now a reverse takeover is a type of acquisition or merger that is used by private companies that want to become public but want to avoid the high costs that normally accompany stock market listings, in IPOs, and all of that. Now, how does a reverse takeover work? First, the private company purchases a majority shareholding in a public company. Typically, the private company is larger than the public company. Then, the private company's shareholders exchange their private company shares for shares in the public company, and it gets listed. अब जैसे let's take two companies. मेरे को डांट सॉरी मेरे को डांटना मत। देर इज दिस वन कंपनी कॉल्ड बालाजी टेलीफिल्म्स। पता है? तू देखता है ना डेली सोप शो? नहीं? दिस नहीं इज सर। लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और दूसरी कंपनी है डिज्नी, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये लिस्टेड नहीं है, बालाजी टेलीफिल्म्स इज लिस्टेड। It doesn't take any genius to tell you that Disney is a bigger company, Balaji is a smaller company. ठीक है, so Disney क्या करता है? Disney purchases shares of Balaji. Disney purchases 80% shares of Balaji Telefilms. ठीक है, then the private company's shareholders exchange their private company shares for shares in the public company. ठीक है, so Disney acquires shares of Balaji Telefilms, and in exchange, so how is the purchase consideration settled? By issuing shares in the already listed company. So I was a shareholder in Disney. Okay, Disney acquired shares of Balaji, and in exchange क्या हुआ? So if I have acquired shares of Balaji Telefilms, that means now जो listed company है उसके shares अब मेरे पास है, right? And private companies shareholders exchange their private company shares for shares in the public company. There is a share swap of sorts that happens. Okay, it's not technically a swap, but for example, you acquire 20 shares of Balaji, and in exchange you give one share of Disney. तो क्रॉस होल्डिंग हो गया। नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ डिज्नी ओन शेयर होल्डर्स ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स, एंड नाउ दिस बालाजी टेलीफिल्म्स इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके शेयर होल्डर्स के पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आ गए, सो इनडायरेक्टली दे हैव गॉटन अ लिस्टिंग, राइट? सो इन एन इनडायरेक्ट मैनर दैट प्राइवेट कंपनी, एंड क्या होता है देखो, इफ दिस कंपनी हैड 100 शेयर्स, ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 80 आर अक्वायर्ड बाय डिज्नी। ठीक है, दैट मीन्स डिज्नी नाउ ओन्स द लिस्टेड कंपनी, सो इनडायरेक्टली डिज्नी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज the smaller company now owns the bigger company. Later on you can merge the two companies and you know only keep the identity of Disney alive, and Disney can absorb Balaji Telefilms later. ठीक है, reverse takeovers allow a private company to become public without raising capital. Which considerably simplifies the process. While conventional IPOs can take months to organize, reverse takeovers can be completed much more quickly, saving management time and money. After the reverse takeover, the company's shareholders should benefit from all the advantages of a stock market listing. अब क्या हो रहा है? सी, द वे आई एम टेलिंग दिस टू यू कि अरे इसने इसके 80% शेयर्स खरीद लिए, फिर ये हो गया वो हो गया। बाय द वे, डूइंग दिस इज नॉट सो इजी. Why? Because SEBI, for example, in India, it has a set of restrictions कि at one time how many shares of a public listed company can you acquire. तो
थियोरेटिकली तो वील से एनीथिंग कि अरे इसने इसको खरीदा उसने उसको खरीदा, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ. देर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हियर. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डार्क पूल. Dark pool means, whenever I use the word dark, it basically tells me that, I'm talking about something जिसमें there is a lot of uncertainty and lack of clarity. Dark pool trading relates to trading volume in listed stocks created by institutional orders that are unavailable to the public. The bulk of dark pool trading is represented by block trades facilitated away from central exchanges. It is also referred to as the upstairs market or dark liquidity or just dark pool. ठीक है. Now, all of us now, we are small players, guys. Nobody cares about the fact that I could own 100 shares of Reliance and Kavya could have 1000 shares. We are talking about lakhs of orders being placed for a lot of 1 lakh shares. Now, excuse me, this trade doesn't happen on the stock exchange. This happens off the stock exchange. And because it happens off the stock exchange between different individuals, see, there is no market mechanism to regulate the prices. ठीक है. There is no market mechanism to check whether the commitment is being honored. You are likely to, make a lot of money here. ठीक है. uh, you have the opportunity of course to make a lot of money, to make super profits. ठीक है. वो opportunity है. But at the same time, because there is no stock market regulator to, or no SEBI or no one, so to say, it's very easy to lose money on these transactions, and it might happen that the other party does not honor the agreement in the given amount of time, and then you cannot even bring them to a court of law because these transactions are happening outside the market, so to say. ठीक है. सो लिक्विडिटी है बट कंप्लायंस एंड अदर इश्यूज भी काफी सारे हैं, सो दिस इज अ, मतलब, क्वेश्चनेबल एरिया है. यस मिस्टर शाह. सर दिस इज लीगल? नो, नॉट हाँ, रियली. क्योंकि ऐसा एक वर्ड है हिंदी में या गुजराती में हम लोग बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग करके। ओके. हाँ, तो मतलब ये बेसिकली वही है कि स्टॉक मार्केट वही वैसा ही है कि इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, बट इंटरनली सिर्फ वैल्यूज के ऊपर से चिट्ठी पे सब कुछ होता है। हाँ हाँ, वेरी स्मार्ट यू आर. वही है. ऐसे ही समझ, हाँ हाँ डब्बा. हाँ। चलो, एक बार रीड द प्रॉब्लम विद डार्क पूल ट्रेडिंग. इस पे एक क्वेश्चन आया था हाँ इन द पास्ट. एक ही आया है. यू विल गेट इट इन द शीट. देख लिया. Yes. यस सर। ओके. The next topic that we have is cryptocurrency. Now, my problem with cryptocurrency is that my understanding of cryptocurrency is quite limited. You tell me what is crypto? What is your understanding of crypto? Who can tell me? Shashank, do you know what is cryptocurrency? सर डिजिटल करेंसी अच्छा, विच है मतलब रेगुलेटरीज, मतलब नॉर्मल रेगुलेटरी के अंदर नहीं आता है। ओके.
क्या नहीं आता है नॉर्मल रेगुलेटरी के अंदर? ऐसे लिखेंगे हम पेपर में? नहीं सर, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बस। ऐसे ही बोल दिया? The decentralized tokens which are based on blockchains. बाप रे बाप रे बाप रे। एक्सप्लेन भी कर दे, इतना सब बता रहा है तो। हाँ सर। सर ये डिसेंट्रलाइज मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उसके ऊपर सारे ट्रांजैक्शंस मतलब कैसे बोलूँ थोड़ा वो मैंने सर एसबीआर में समझाया था, अभी मुझे वापस तो रिकॉल करने में हो रहा है। अच्छा कार्तिक, आप ही बता दो चलो। सर कुछ कहा गया आपने? हाँ। हाँ, कैन यू टेल अस व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? बेसिकली डिजिटल करेंसी, व्हाट वी यूज टू हियर। मतलब यार, अगर मैं ऑनलाइन जीपे कर रहा हूं तो वो क्रिप्टो है? मैं नो सर। अंडरस्टैंड वन थिंग, कि व्हेन वी टॉक अबाउट करेंसी, नोट्स कॉइन्स जो भी है, तो वो जो पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, वो जो पीस ऑफ पेपर है उसको वैल्यू कौन देता है? दैट पीस ऑफ पेपर मस्ट बी वर्थ 5 पैसा, बट उस पे लिखा है ना 500 रुपीज, हु गिव्स इट दैट वैल्यू? इट इज the द fact that it is issued by the central bank of the country, and there is the signature of the governor of RBI on that particular piece of paper, उससे वैल्यू मिलता है ना, which is why we call it legal tender. So rupees, dollars, all of these are legal tenders. But cryptocurrency is digital money that exists only on the internet. It is not printed money, not controlled by a bank or government, and as you correctly pointed out, it is controlled by a technology called blockchain. ठीक है? अब think of it, like normal currency is controlled by banks and government, cryptocurrency is controlled by, say, an online system of computers. Now you can use that money to, you can use cryptocurrency to settle certain transactions without having a bank in between. ठीक है? अब cryptocurrency, I mean, what I have read and understood is, you have to do mining of cryptocurrency, Ethereum and Bitcoin and all of that. Up the reason why the reason why I have a problem trusting crypto is, उसका वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है ना, ये मुझे नहीं पता. I find it very difficult. See, I mean, I know it. I just find it very difficult to trust the fact that its value is derived from some source. Now, when see, matlab the technology is called, as we discussed, the technology is called blockchain. ठीक है? Why is it called blockchain? Because see, there are a list. There is a link of blocks, मतलब जैसे they are connected हैश। transactions, which are, so there are different transactions that take place and they are linked through a code, for example, and these transactions which are linked through a code, they give, ultimately they give value to that particular transaction. अब ये actually कैसे function करता है, I don't know. Think, but from what I have understood in very simple terms, see, a crypto wallet is like a digital bank account and you have a password. So when you send crypto, you know the receiver's wallet address. You enter your key, he gets his key, and once the amount is verified, it goes from one person to another. And जैसे शेयर्स का आईपीओ होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है. ठीक है? नाउ let's see, my knowledge on crypto is, like I told you, unfortunately very very limited. They are not going to ask you any interpretation based questions in AFM. My recommendation to you would be, एक बार पढ़ लो and खत्म करो. Don't spend too much time in theorizing or trying to understand. I am openly accepting my knowledge on crypto is very very limited. एक बार पढ़ो, advantages disadvantages याद कर लो. ठीक है? I'm keeping the screen open.
Yes, sir. Has everyone gone through this? So 1 second. Take your time, it's okay, take your time. आज नहीं हुआ तो I'll conduct another session, don't worry. So done. Okay. I'll scroll a little. लर्न करके चले जाना पेपर में, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, ठीक है? दिमाग लगाने के लिए है टॉपिक्स अपने पास. दिस इज नॉट समथिंग दैट. ठीक है. Yes, sir. So can you scroll up once? श्योर. Thank you. नो वेलकम. Can you explain this statement in the security token offering paragraph here? They have written the tokens issued are asset backed. इसका simpler meaning क्या रहेगा? So they are saying that in case of security token offerings, like currency is also, like your currency notes are backed by gold reserves. Similarly, security token offerings are also backed by some asset of a similar kind.
ठीक है। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो, let's do one thing. Let's take a quick 10 minutes break. We'll come back and continue.